ऑलराइट गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दिस इज Raja Uzair from Fingertip Accounting. Today's unit of concern is depreciation and disposal of non-current assets, of tangible non-current assets. इस वजह से लिखा है because I'm recording this very video solely for the sake of O and AS level accounting. Alright guys, now इसमें सबसे पहले इस यूनिट में तो आपको पता होना चाहिए कि maximum how many accounts may get examined. So there are two very accounts which may get examined in this very unit is number one. Number one is the cost account, or उसके बाद number two is the provision for depreciation account, which will be dealt by later. Now the point is this कि cost account के maximum items कितने हैं? Since cost account is actually having a debit balance, so BD on the opening debit side on the opening date and CD on the credit side on the closing date. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं additions on the debit side, और credit side पे हमारे पास आ जाता है disposals. Now the point is this guys. Now why would majority of the students flunk in this very question is due to three reasons. कुछ ऐसे students होते हैं जो इस unit में बिल्कुल ही U grade ले लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है दैट दीज वेरी फोर आइटम्स व्हिच मे अपीयर इन द कॉस्ट अकाउंट, ये चार आइटम्स के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। दूसरी बुनियादी वजह ये होती है कि अगर इन चार आइटम्स के बारे में पता भी होता है तो उसके बाद इन बातों का मतलब क्या है, लाइक एडिशंस का क्या मतलब है, डिस्पोजल्स का क्या मतलब है, इन बातों का मतलब पता नहीं होता। um, तीसरी चीज, इनकी कैलकुलेशंस नहीं आती, इनकी करेक्ट फिगर्स हम सही प्लेसेस पे इंसर्ट नहीं करते, एक चीज। उसके बाद द सेकंड वेरी अकाउंट व्हिच मे गेट एग्जामिन्ड इज द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात बहुत ही कोई गलत बताई जाती है, या वो बहुत गलत इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी conceptual knowledge और अंडरस्टैंडिंग में लैप्स है कि provision for depreciation is actually an expense. If that is an expense, so that expense will always be having a debit balance. So provision for depreciation in no way is an expense. I'm clearly illustrating this very fact loud and clear. A provision for depreciation is not an expense account, rather a liability account. अब ये liability account क्यों है, that will be dealt by later. But provision for depreciation account की चार बातें हैं. Provision for depreciation account is having a credit balance, which means brought down on the credit side on the opening date and carried down on the debit side on the closing date. उसके बाद यहाँ पे आता है इनकम स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे आ जाता है डिस्पोजल। जिस तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिस तरह से कॉस्ट अकाउंट की चार बातें हैं, इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट की भी चार बातें हैं। अगेन, why would many of the students flunk in this very question is कि उनको इन तीन चार बातों का मतलब ही नहीं पता होता, और अगर मतलब पता होता है तो फिर कैलकुलेशंस जो करनी होती हैं वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। So majority of the students I've seen over the past decade के वो depreciation and disposal of non-current assets में अच्छा परफॉर्म नहीं करते गाइस। अगर आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, so how will you be able to solve a financial statement question which is actually involving adjustments of this very unit? और अगर ये यूनिट अलग से एग्जामिन हो जाए तो भी आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। द लास्ट वेरी बिट of this very account is actually of this very unit is the disposal account. Again, majority of the students को ये बात ही नहीं पता होती कि disposal account की actually चार बातें हैं, which is non current asset at cost, यहाँ पे आएगा accumulated depreciation will appear on the credit side, cash, bank, etc. may appear on the credit side. If that is a loss, if that is a loss, so it will be appearing on the credit of the disposal account. If that is a profit, that will be appearing on the debit of the disposal account. और एक चीज गाइस, मैं आप सबको बताता चलूं कि आप लोगों ने जिंदगी में ये बात कभी भी नहीं सुनी होगी, but this may be the case which till yet is not examined, which till yet is not examined। और ये केस क्या है? We'll be dealing with this very case when studying depreciation and disposal of non-current assets in detail. I can bet on that majority of the students, 99% of the students को ये बात ही नहीं पता कि ये यहाँ पे कैश में कैसे आ सकता है भाई, ये how is that even possible? So there you go guys with depreciation and disposal of non-current assets. पहली चीज जिसमें आप problems face करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि maximum items किसी account में कितने हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ये पता होता है तो उन बातों का मतलब नहीं पता होता। तीसरी चीज, अगर उन बातों का मतलब भी पता होता है, सो यूजिंग द
reducing balance method, using the straight line method, using the revaluation method, you are in no position to calculate the correct figures. If you are in no position to calculate the correct figures, either in accounting you score full marks or you score not. ठीक है ना? So this is how it goes. वन ऑफ के मार्क्स पे जीना छोड़ दो, उन फिगर के मार्क्स पे जीना छोड़ दो, और करेक्ट एब्सोल्यूट मार्क्स लेना शुरू कर दो. और जब एब्सोल्यूट मार्क्स लेना शुरू करोगे, सो गाइस, you'll do wonders and you'll score a distinction. Thank you so very much.